division of faith. Actually, that is the one most important aspect of our development, of our progress, is as we practice the process of Krishna consciousness, our faith should get firm, deeper. We should be more convinced. Krishna Bhakti kaile sarva karma krit hoy. Not the other way. Sarva karma kaile Krishna Bhakti kabhi na ho, kabhu na hoy. Mass of men, even those who try to come to practice the process of devotional service, they are still not clear. Why? Because the faith has not instilled in them. They lack the faith. They lack the faith in the process, in Shastras, in Sadhu, and of course they don't have any Guru. So again and again they are trapped in the vicious cycle of karma. So here Krishna is giving so much of details. And in this section we are discussing food, and then there will be sacrifice and austerities in the three modes. So we come to the 9th verse. You will be discussing on 11 we'll be discussing. Never mind. Yes, sir. Have we stopped taking the food in the mode of passion and ignorance? No. Have we come to this realization that we will be only taking sattvic food? Then let us better hear again. Katva amla lavanati ushna tikshna ruksha vidahina ahara rajasya yestha dukkha shoka maya prada. So these are talking about those people. People are very taste conscious. You see this entire world, people will drive down 10 kilometers, 20 kilometers, even hundreds of kilometers. Why? To get the taste of tongue. What kind of food is discussing? Food that are too bitter. Any example of bitter food? Some examples of bitter food. You have to participate. Boliye. Yes. Krishna Prabhuji, bitter gourd recipes. Sorry? Neem, dishes made with neem and bitter gourd. Did other devotees here? I am not able to hear clearly. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, which recipes those which are made from neem and bitter gourd? No, not only that bitter. Okay, that is also bitter. That is bitter gourd, Karela. Normally we say Karela. Okay, any other example? Yes, Ravindra Prabhu. Prabhuji, I also saying about this bitter gourd. Bitter gourd, that's Karela. That means that is not naturally sweet. It is katu. Katu means it is kadu. And amla. Amla means that is too sour. Mostly the fast foods. You've seen the Mexican foods people take. Salty, hot, pungent. You see all this life outside counters that people have. What kind of food it is? Last time I gave the example of one of such items, the momo.
It is taken with very spicy. It is spicy sauce. The sauce is so spicy. When I little bit of tasted it, and for 2 days, as I said, my body could not adjust. It was so bitter. It was so hot. It was so pungent. So this, what does food does? It is burning. When you eat, your entire body burns. You perspire. The skin will release so much of sweat. Even tears comes out. Have you seen people later? Tears are coming out, perspire, but they are very addicted. It is like, they have some addiction for this kind of food. And the food industry has grown into such billions of dollars. And what do they do? Normally, they add some additive. Like, this Chinese food. Chinese food is very popular all over the world. So what they do, they have this Ajinomoto. You know Ajinomoto? Most of the countries have banned it. If there is no Ajinomoto, there is no such taste. Just for the taste of the tongue, they are indulged in eating this kind of food. So Prabhupada is Krishna is saying that such food which are dear to those in the mode of passion, those who are passionate, those who are overwhelmed by kama. Mode of passion means what? There is continuous, they are burning under the fire of passionate desires. Such foods cause distress. All that is why you see people most of the time they have problems in their liver, in their digestion, in their stomach. Why? Because the intake is such. It is cause distress, misery, and disease. Either you can have taste or you can have health. So we should never be inclined, and we should never ever eat outside. Or one more thing is golgappa. You see golgappa? And when they will eat it, they will tell the vendor, isko aur tikha karo. Add some more spice to it. They will be burning. And it is not very hygienic also. On the street side, they will eat. So this is all example of those who are in the mode of passion. They like this kind of food. So if we eat this kind of food, invariably we will not be able to come to the mode of goodness. We will not be able to practice the process of Krishna consciousness. The process of perfecting, the process of purification cannot take place. I'll see if I have some slides. One moment. I'll share some slides. So here it is from Chaitanya Charitamrita. So what kind of food we should be taking? It says that both the prasadam and the Lord's name are on the Brahman platform or spiritual platform. One should take prasadam with great faith. Wa prasadam dilo bhai sei annam pao. Shri Shri Radha Krishna gun pao. And chant the holy name of the Lord and worship the deity in the temple. Always remembering that the deity Mahaprasad and the holy name do not belong to the mundane platform. Okay, these are important aspects also we want to discuss.
That regarding the attitude for taking prasad, if you think it is something palatable, so let me take more and more, then that is some gratification. Krishna prasad is gracious gift, Krishna's remnant. So what is the concept of prasadam? So we should take only prasad and we should dismiss from our practice this kind of passionate food, that everything belongs to Krishna and used for Krishna's pleasure. Prasadam can refer to anything that we offer to Krishna. It helps practice offering our love and devotion to Krishna. So these are some of the quotes from Srila Prabhupada's lecture, from Prabhupada Leela. Okay. There's not much on mode of passion. So in our preparation, we should very diligently try and not include such preparations which are passionate. In how many of your kitchen you don't have any red chili? You don't buy red chili at all. No hand is up. That means you are taking red chili. In my experience of temple in purchases, I don't allow purchasing of red chili. Whether it is acceptable or it is not acceptable, no compromise. What about you there, Shil Prabhu? You people are purchasing red chili. But we use Prabhuji green chili only. Huh? Mostly we use green chili Prabhuji. What green I chili. am asking, give me a specific answer. Do you purchase in last 1 year? Have you purchased red chili? Red chili. Red chili powder we have probably. You have purchased, you should stop it. It is very, very detrimental to our health and to our practice in Krishna consciousness. We should not be consuming red chili at all. And all this kind of food is tamarind, amla. Too much of tamarind, too much of amchur powder. All this we should not be consuming. We should basically use only very basic spices. That's all. Minimum the spices, the better the preparation. Why? Because not only one will remain in the lower mode, but it will cause distress, misery, and disease. Very clearly, Krishna is speaking here. Ahar rajasa dukkha shoka maya pradam. So if you want to be happy, if you want to be healthy, then we have to subscribe what Krishna is speaking. What about you, Purushottam? You are also silent. So we are generally taking green chili, but purchase करके लेके आप आए हैं, घर पे रखा रहता है, but normally green chili. रखा रहता है किसके लिए? पड़ोसी को देने के लिए? खरीदा है इसका मतलब क्या है? किचन में है मतलब क्या है? See, it is up to us. If we don't accept what Krishna speaks, then be ready for distress, misery, and disease. Then Krishna speaks about the even lower mode of food, which is yatayavam gatarasam uti paryushitam chayat uchistamapi chamedhyam vodanam tam sapriyam yatayamam. This is another culture that we have now.
the so-called contemporary person, the lady in the house, she cooks for one day and she preserves for the remaining 6 days. That is an innovation or invention of refrigerator. What Krishna is speaking? Food prepared for more than 3 hours before being eaten. That is in the mode of ignorance. That means if you have to eat 3 times, you have to prepare 3 times. Because after 3 hours, the food converts. So you see, the decay process of the food begins. Any cooked food, it does not stay, it does not continue. Why? It deteriorates. Inherently, it has the property of deteriorating. So here Krishna is saying very, very important. Food prepared for more than 3 hours. That is why in the Western world, everyone is in the mode of ignorance. What kind of food they have? Refrigerated food. Frozen food. Everything is frozen. Of course, most important is their intelligence is frozen. They cannot understand. Food that is tasteless, decomposed and putrid. Food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. So that is why we should always have deities in the house. Why? Because if we have deities in the house, Grahastha house means center should be deity worship. And if we have deities, we have to prepare Bhoga. And Bhoga cannot be कल बनाया था आज भगवान को भोग लगा देते. That is not Bhoga. So this kind of malpractice or this kind of practice in the mode of ignorance can be strictly avoided. Even my mother sometimes, if we go out and dine, she prepares very little just to offer to the Lord. But even in this day, she has to prepare to be offered to the Lord. Not that what was kept inside the refrigerator 2 days back, you just again heat it and offer it. So all this packed food, when I was staying many, many years back outside India and working, so there was this system of heat and eat packed food. Either there was frozen, in Europe there was frozen food, or there was this canned food. And it was there for months. What you have to do? You have to just open the can, put the content in the pan, heat it and eat it. So what are we taking? Tamoguna. So Prabhupada says the purpose of food is to increase the duration of life. Ravindra Madhusudan Prabhu, can you see where is our Manoram Jagannath Prabhu? We're not able to join today. Just check. The purpose of food is to increase the duration of life. This is first a prerequisite. Why should we eat? That is in the mode of goodness. Ayu Sattva Bala Arogya. Purify the mind. This is very important. Srila Prabhupada is emphasizing that the purpose of food is not just filling the belly or quenching one's hunger or nourishing the body. But Prabhupada says is to purify the mind and aid bodily strength. This is its only purpose. In the past, great authorities selected those foods that best aid health and increase life durations. So this should be the criteria of selection. That is healthy and that will extend one's life duration, that will purify the mind.
that increases like such as milk products. But it's very difficult to get pure milk now. So very difficult to get milk which is pure. All the milk which comes is synthetic milk, not just adulterated. It is not at all milk. It is poison. You don't know what is coming. So be very, very choosy in selecting this right source of milk. Very difficult to find the pure cow milk. As far as possible, we should not drink buffalo milk. Buffalo means what? Fat. Moti buddhi. Akal badi ya bhais. If we drink buffalo milk, then our intelligence will also be like a buffalo. We should always try to drink cow milk. Cow milk nourishes the body and it also nourishes our brain tissues. Prabhupada has so overwhelmingly spoken about it. So that our intelligence is sharpened, so that we can understand the Shastra. In Kali Yuga, it is almost impossible to understand what the Shastra is speaking. Why? Because there is no intelligence. So how to have the spiritual intelligence, sharpened intelligence, is to consume pure cow milk. That is why Prabhupada always propagated to have farm communities. That we should have our own cows. And if we have okay. If we have our own cows, then we can have not only milk, from milk we can have butter, from butter we can have ghee, everything will be pure. It will purify the mind and it will nourish the brain tissues. So Prabhupada is mentioning here milk products, sugar, rice, wheat, fruits and vegetables. These foods are very dear to those in the mode of goodness. So Prabhupada did not give purport in the 8th and 9th verse. So he is summarizing for both the above modes also in this purport. These foods are very dear to those in the mode of goodness. Some other foods such as baked corn and molasses, which are not very palatable in themselves, can be made pleasant when mixed with milk or other food. So what Prabhupada is emphasizing that even if those food items which are not in the mode of goodness, molasses is in the mode of passion, or rather in the mode of ignorance. What is molasses? It is fermented. It is in which mode? It is in the mode of Tama. But if it is added with milk, so the property of Sattva Guna nourishes it to Sattva Guna. Can be made pleasant when mixed with milk or other products. They are then in the mode of goodness. All these foods are pure by nature. Which food is pure by nature? Milk, sugar, cereals like wheat, rice, fruits, vegetables. They are foods. All these foods are pure by nature. They are quite distinct from untouchable things like meat and liquor. Fatty food, as mentioned in the 8th verse, have no connection with animal fat obtained by slaughter. Prabhupada has to clarify this because in the West it would be misinterpreted. Animal fat is available in the form of milk, which is the most wonderful of all milk. Butter, cheese, and similar products give animal fat in a form which rules out any need for the killing of innocent creatures. It is only through brute mentality that this killing goes on. The civilized method of obtaining needed fat is by milk. Slaughter is the way of subhumans. Protein is amply available through split peas
dal, whole wheat, etc. Food in the mode of passion, which are bitter, too salty, or too hot, or overly mixed with red pepper, black pepper, white pepper, cause misery by reducing the mucus in the stomach, leading to disease. Foods in the mode of ignorance or darkness are essentially those that are not fresh. Very important. Mothers, you are hearing, please do not feed your family stale food. You understand what is stale food? सुबह का बना शाम को मत खिलाओ, शाम का बचा अगले दिन फ्रिज में रख के मत खिलाओ. Otherwise, we will be inflicting in our family distress and disease. Again, Prabhupada is saying, any food cooked for more than 3 hours before it is eaten except prasadam food offered to the Lord is considered to be in the mode of darkness because they are decomposing. Such foods give a bad odor, which often attracts people in this mode, but repulses those in the mode of goodness. Remnants of food may be eaten only when they are part of the meal that was first offered to the Supreme Lord or first taken by saintly person, especially the spiritual master. Otherwise, the remnants of food are considered to be in the mode of darkness, and they increase infection or disease. Such foodstuff, although very palatable to persons in the mode of darkness, are neither liked or even touched by those in the mode of goodness. The best food is the remnant of what is offered to the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, the Supreme Lord says that he accepts preparations of vegetables, flour, and milk when offered with devotion. And Prabhupada quotes the famous verse, Patram Pushpam Phalam Toyam. Of course, devotion and love are the chief things with which the Supreme Personality of Godhead accepts. But it is also mentioned that the prasadam should be prepared in a particular way. That is very important. There is a prescribed way to prepare prasad. Any food prepared by the injunction of the scriptures and offered to the Supreme Personality of Godhead can be taken even if prepared long ago, because such food is transcendental. But still we should try. We should not think that we are on the transcendental platform. भगवान को भोग लगा लिया एक बार, सब्जी फ्रिज में रख दी है, रोज खाओ. Not like that. Therefore, to make food antiseptic, very important, Prabhupada is giving very practical goal, that to make the food antiseptic, that saves us from infection. 1 minute. Hare Krishna. Therefore, to make the food antiseptic, eatable, and palatable for all persons, one should offer food to the Supreme Personality of Godhead. So Prabhupada is giving so much of recommendation. So we can have a practical discussion before we go ahead, because this is something which we every day prepare. Without preparing food, we cannot survive. The body cannot survive. It cannot exist. So I would like Mataji's to share that what is their experience, or how do they prepare prasad, and what practice do they adopt, or where they feel after hearing what Krishna is speaking, what Srila Prabhupada is detailing, what is there that we can change to keep the food in the mode of goodness, or
to make the food antiseptic. Antiseptic means that it is accepted by Krishna. If it is accepted by Krishna, it is prasad. And if we take prasad, in the 3rd chapter we read and discussed, it is like taking vaccination. It becomes antiseptic. बोलिए प्रियंका, आप स्टार्ट करिए. It is now Mataji's section. They will enlighten us. फूड तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑफर होना चाहिए, प्रसादम होना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चला कि मोड ऑफ गुडनेस में जो फूड बनाया जाता है वो सही होता है। तो हम चिल्ली का यूज थोड़ा कम कर सकते हैं। थोड़ा कम करेंगे, अच्छा, बंद नहीं करेंगे। तो मुझे ग्रीन चिल्ली उतनी भी बीटर नहीं ग्रीन होता चिली ले है। सकते हैं, लेकिन रेड चिली, चिली फ्लेक्स, अभी आजकल बहुत वैरायटी के चिली आती है। रेड चिली, चिली फ्लेक्स, आई डोंट नो, कुटी मिर्च, साबुत मिर्च, देयर सो मेनी वेरिएंट्स। Yes, Prabhuji. कंटिन्यू। और उतना ही बनाना चाहिए जितना वन टाइम के लिए सही हो। आर यू श्योर? ऐसा करते हैं आप? नहीं प्रभुजी, ज्यादा देर नहीं हो पाता। हम्म। ज्यादा देर प्रभुजी नहीं हो पाता, रह जाती है, बच जाती है खाना। दिन में 2 टाइम पकाना मुश्किल लगता है? नो प्रभुजी, 3 टाइम पकाती हूँ वैसे। 3 टाइम पकाता है। यस, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। Yeah. Why? Because if we are preparing to be offered to Krishna. What is this preparation? This is an expression of our love and devotion for Krishna and also for our family members. This is what the mothers and the wives are meant to do. How do they express their love for their family members? Is through their preparation, to the food that they prepare. So there should not be any, cutting the corners. You understand what is cutting corners, no? Okay. So any practical aspect, something that you will avoid and something that you will add? अवॉइड करना चाहती हूँ प्रभु जी कि यहाँ पे लिखा है, श्री प्रभुपाद जी रिकमेंड कर रहे हैं कि प्रसादम शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर वे। देन प्रभु जी शुद्धता की ट्राई यही रहेगी कि कैसे हम शुद्धता से बना सकते हैं, मतलब कॉन्शियस भी भोजन बनाने में ही हो, कुकिंग करने में ही हो, कि हम जगन्नाथ जी के लिए बना रहे हैं। तो प्रभु जी कि हमारा माइंड जो है वो प्योर रहे। हाँ, उससे माइंड प्यूरिफाई होगा। प्रभुपाद जी ने लिखा ना, फूड शुड प्यूरिफाई आवर माइंड। ओके। रविंद्र प्रभु प्रिपरेशन करते हैं, ये भी एक्सपर्ट है इन कुकिंग। बोलिए प्रभु जी, आपने इसमें एक बताया है जो मोलासेस जो फॉर्मेटेड होता है वो मिल्क में ऐड करके खाएंगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है बोले, तो मतलब किस प्रकार से फूड होता है कुछ समझ मुझे में कोई नहीं आइडिया नहीं है, बेटर है उसको नहीं ट्राई करें। इतने सारे मिल्क प्रिपरेशन है, वो ट्राई करिए ना। अभी कौन पूछ रहा था? हाँ, मैं रम्या माता जी से बात कर रहा था। अरे सिंपल है, मिल्क से प्रिपेयर करो ना। अरे जिसको गोपीनाथ जी अपने भक्तों को देते हैं वो बनाओ ना, शीर बनाओ। इतनी वैरायटीज ऑफ शीर बनती है, केसर की बनती है, सो मेनी वैरायटीज ऑफ खीर इज देयर। अलग अलग वैरायटी बनाओ। मोलासेस को काय को पकाना है? अभी इसका मतलब है कि बुद्धि तमोगुणी है, उसको अभी चाहिए वही स्वाद, किसी तरीके से रैप कर दो। नहीं नहीं प्रभु जी, मुझे क्या है क्या चीज पता नहीं था इसलिए पूछा। मोलासेस नहीं जानते? नहीं, जो गन्ने के रस को सड़ाते हैं अच्छा, मुझे और पता उससे नहीं था। शराब बनाते हैं, जी जी। मोलासेस। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं, क्या कहते हैं?
खजूर की भी होती है ऐसा। हाँ प्रभु जी खजूर से भी इस तरह की कुछ बनाते हैं। हाँ, हो सकता है, फर्मेंटेशन है ना, प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। तो एंड Yes. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर फूड स्टेल हो गया है तो वी शुड नॉट कंज्यूम इट, वी शुड डिस्पोज इट। क्या बोलना चाहते हो भाई देवर्षि साहब, क्या बनाते हो, बोलो। हरे कृष्ण पुरोहित, जो मुरब्बा वगैरह वो जो अचार वगैरह रहता है वो तो भी तो मोड ऑफ फैशन किसमें में है आपको क्लियर हो जाना चाहिए, किसमें है। मोड ऑफ आपने कभी देखा मैंने अचार खाया, या कभी किसी से मांगा कि अचार लाओ? मोड ऑफ इग्नोरेंस है। लेकिन हमारे मेस वाले लोग अचार जरूर खाएंगे, उसके बिना उनको रोटी नहीं जाएगा नीचे। फ्रेश सब्जियां खाने में टेस्ट नहीं आता, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है उसी में टेस्ट मिलता है। फिर क्या किया जाए, रहो इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस में साथ साथ डिस्ट्रेस एंड डिजीज। एटलीस्ट वी शुड बी सिलेक्टिव, not to take anything and everything which is offered. We should be very clear what we should consume, because our consciousness will depend on what we eat. बोलिए मानिनी माता जी, आपने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? अब आपकी बोलने का समय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, अम, ये मतलब जैसे रेड चिल्ली को अवॉइड करना है टोटली, बिटर, सॉल्टी, हॉट, ये सब चीजों को अवॉइड करना है, एंड शुद्धता मेंटेन करना चाहिए। जैसे मतलब नहा धो के ही मतलब हमेशा भगवान के लिए बना रहे हैं सोच के, मतलब उनकी चिंता, मतलब भगवान के बारे में सोचते हुए या चैंटिंग करते हुए मतलब प्रसाद बनाना चाहिए। और हम क्या सिलेक्शन करते हैं? हम ये सोचते हैं क्या कि भगवान को क्या पसंद है वो खरीद के लाएंगे या वो बनाएंगे? प्रैक्टिकल रही है। बहुत कम। जो हमें पसंद है हम वो बनाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है या नहीं? तो कम से कम एक टाइम ऐसा बनाइए जो भगवान के लिए। बाकी तो 2 टाइम हम अपने लिए बनाते हैं, भगवान को खाली ऑफर कर देते हैं कि वो कन्वर्ट कर दें। एक वक्त बता रहे थे, भगवान को हमने एक मशीन बना रखा है। मशीन मशीन क्या करती है? कन्वर्ट करती है। उनके सामने थाली ले जाओ, घंटी बजाओ और ये लो भोगा, प्रसाद कर दीजिए, और फिर हम इसको एंजॉय करते हैं। तो उस मानसिकता से बाहर आना चाहिए, प्रयास करें। एटलीस्ट जब फेस्टिवल्स हैं या कोई स्पेशल ओकेजन है तो उस दिन हम प्रयास करें कि आज हम भगवान की प्रसन्नता के लिए। सारी कॉन्शियसनेस कहाँ से शुरू होती है? इवन इफ वी आर परचेसिंग, व्हेन वी गो फॉर परचेसिंग टू बाय द रॉ मटेरियल्स, सारे लेवल्स में, and we should be conscious for whom we are purchasing, what we are selecting, for whom we are selecting. Then while we are preparing, we are cutting, cleaning, chopping, while we are cooking, while we are offering, while we are serving, and while we are eating. At all stage, at least try that it is for the pleasure of our Supreme Lord, of our deities. We are not the enjoyer. हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान, तो उनकी प्रसन्नता के लिए ऑफर करते। तो जो हमारे फेवरेट आइटम्स हैं उनको ना बनाए, और जो हम देखते हैं जैसे चेतन चरितामृत में बहुत बार आता है कि महाप्रभु को क्या पसंद है। महाप्रभु को क्या पसंद है बोलिए?
प्रभु जी दूध वाला आइटम सब पसंद है, पनीर, दही, खीर। अच्छा, उनको साग पसंद है, साग। सोप पसंद है। हाँ। जो सॉन्ग है जब भगवान को भोग लगता है, वो सॉन्ग आप एक बार 2-3 बार पढ़िए अच्छे से। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा मेंशन किया है कि भगवान को क्या क्या पसंद है, जब भगवान को कैसे राधा रानी कुक करती है, क्या क्या कुक करती है। वो सॉन्ग सुना है या नहीं सुना है? किसको कौन सा प्रभु, song? कौन सा प्रभु जी पता नहीं। बोलो बोलो रविंद्र प्रभु। जब भगवान को भोग लगता है तो वो सॉन्ग बोला जाता है, वो सॉन्ग गाया जाता है। अभी मंदिर में हमारे यहाँ रोज जब भगवान को राजभोग लगता है तो वो भजन गाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, हरे कृष्ण प्रभु जी, भज भक्त वत्सल। भगत वत्सल श्री गौर हरि। श्री नहीं गौर जानते? हरि। हाँ, सॉन्ग बुक में है, लेकिन इसका प्रैक्टिस कम से कम होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं, नहीं करते लोग, नहीं गाते। जरूर गाना चाहिए। जब भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। बहुत ही सुंदर है कैसे श्रीमती राधा रानी कुक करती हैं, क्या क्या आइटम्स कुक करती हैं, और, और कैसे भगवान को खिलाती हैं। आपने नहीं सुना माननीय माता जी? नहीं प्रभु जी। कमाल हो गया। खोलिए, आप आपके पास सॉन्ग बुक है? हाँ प्रभु जी। सॉन्ग बुक खोलिए। भोग आरती के नाम से है, भोग आरती। भज भगत वत्सल श्री गौरा हरि, श्री गौरा हरि सोई गोष्ठ बिहारी। बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है। तो एटलीस्ट कभी हम इन सॉन्ग को देखें, भजन देखें। मैंने पहले कई साल पहले आपको डिवोटीज को कहा था कि सॉन्ग बुक से डेली एटलीस्ट एक भजन गाना चाहिए, एक भजन गाना चाहिए। 5-7 मिनट निकालिए और बस अपने जो डीटीज हैं उनकी तरफ ध्यान करके, फोकस करके उनकी प्रसन्नता के लिए एक भजन गाइए। बहुत ही प्यूरिफाइंग एक्सपीरियंस है। हरे कृष्णा। रम्या माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहती है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं कई बार रथ यात्रा के टाइम ये वाला भजन से जो जो आइटम है सारे बनाने की कोशिश करी हूँ, पर सारे तो बना नहीं पाई, पर बनाई हूँ कुछ कुछ आइटम। ये बहुत अच्छा है। जय हो, जय हो, जय हो। ये सुन के तो मेरी भी इच्छा रही कि जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो मैं भी आऊंगा। ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। आपने जगन्नाथ जी के लिए, हाँ, आपके पास जगन्नाथ जी के डिटीज हैं, बीच बीच में जब भी मौका लगे उनको जितने मैक्सिमम भोग आप बना के ऑफर कर सकते हैं करिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही बनाइए। जी प्रभु जी, मैं गर्मियों में कोशिश करती हूँ कि कटहल की सब्जी बनाऊं ज्यादातर जितना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। एटलीस्ट मंथ में एक बार उनके लिए फीस्ट रखिए, और जो आइटम्स उनको पसंद है। माननीय माता जी, आपके घर में डिटीज है? प्रभु जी डीटी है, मतलब एक्चुअली प्रभु जी हमारे घर में जैसे राधा माधव का डीटी है, मार्बल का। मार्बल का? क्या बात। हाँ एक्चुअली प्रभु जी क्या है कि वो मेरे इन लॉज जो हैं वो लोग गौड़ीय वैष्णव दीक्षा लिए हैं प्रभु जी। अच्छा, बहुत साल हो गया तो वो लोग लेकिन हम लोग के घर में क्या होता है प्रभु जी, मेरा खाली अलग बनता है, उन लोगों का अलग। वो लोग प्याज लहसुन सब खाते हैं प्रभु जी। राधा माधव को प्याज लहसुन खिलाते हैं? नहीं वो लोग नहीं भोग लगाते प्रभु जी, खाली सुबह का जो मीठा हो गया या फ्रूट्स हो गया वही लगाते हैं। तो फिर वो गौड़िया कैसे हैं? हाँ प्रभु जी नहीं फॉलो करते हैं वो सब चीज।
तो थोड़ा दिक्कत होता है, मुझे बहुत दिक्कत होता है घर में थोड़ा नहीं, नहीं, तो फिर ये तो गंभीर विषय है, बहुत हाँ गंभीर प्रभु जी। विषय है, क्योंकि हम वो कोई गुड़िया गुड़िया थोड़ी है कि जो हाँ गुड्डा गुड़िया की जैसे मर्जी करें। प्रभु जी, पूजा करते हैं पूरा रीति रीति, मतलब जैसे 3-4 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन वो सब चीज नहीं छोड़ते हैं, और थोड़ा वो दिक्कत होता है मुझे घर में, मैं बोल ये नहीं बात है पाती ना, हूँ। देखिए ये प्रभुपाद जी कृपा है, ये हम लोग के ऊपर प्रभुपाद जी कृपा है जो हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी इतनी डिटेल से सारा कुछ एक्सप्लेन कर। प्रभुपाद जी कई बार अपने फॉरेन रिपोर्टर्स को बोलते थे, बोले देखो हाँ कि ये जो मेरे डिसाइपल्स हैं, यंग अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या मैं इनको पैसे देता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं तो एक बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना रस मिल रहा है कि ये सब छोड़ देते हैं, सब त्याग देते हैं। इसलिए हम इतना शास्त्र पढ़ते हैं, प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम प्यूरिफाई नहीं होंगे, इम्प्योर रहेंगे, तो इम्प्योर माइंड बार बार हमें उसी लेवल पर, हमारा कोई अपलिफ्टमेंट होगा ही नहीं, हमारा भगवान से प्रेम और संसार से वैराग होगा ही नहीं, संसार से ही प्रेम करते रहेंगे और भगवान से वैराग ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोसेस को अप्लाई ही नहीं किया। तो कोई नहीं, आप करिए, आप करिए। तो ऐसे घर में तो राधा माधव है ही नहीं, कैसे होंगे? तो खाली बस उनका स्टैच्यू है, अपराध है। जी प्रभु जी। तो आप तो जो बनाती हैं, अगर हैं डिटीज तो आप उनको भोग लगाइए और आप मैं स्वीकार। सुबह का बना के चली जाती हूँ प्रभु जी, वही थोड़ा भोग लगा देती हूँ सुबह का, जो भी रोटी सब्जी बनाती हूँ, और फिर कॉलेज चली जाती हूँ। फिर आने के टाइम में वो लोग मतलब बाकी सब नहीं भोग लगाते कुछ भी, तो मुझे भी एक एक बार बिना भोग लगाए खाना पड़ता है अभी। नहीं, क्यों बिना भोग लगाए खाना पड़ता है? आप तो भोग लगा के खाती है ना, शाम को हाँ भी वो बनती। सुबह का, हाँ दिन में अगर आती हूँ तो चावल थोड़ा खाती हूँ, तो उस टाइम मैं भोग नहीं लगा के खा लेती हूँ, फिर रात का लगाती हूँ। चलिए एटलीस्ट 2 टाइम लगाने का प्रयास करिए, हाँ और प्रभु कुछ नहीं है तो दूध या कुछ फ्रूट्स लगा दीजिए। जी। प्रभु जी। ठीक है, we will stop here, and from the next class, that will be hopefully tomorrow. Day after tomorrow is Nirjal Ekadashi, as you all know. Yeah. So that day we will try to spend some more time. We can have a long class, we can chant. Pradeep Prabhu, you're back in India? In Yes, Delhi? Prabhu. Yes, Prabhu. I hope you will dine now in Satvik Mess. Yes, Prabhu. Yeah, don't waste time in preparing. Better to dine there. Any question or any discussion? Although it is getting late. अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ प्रभु, बोलिए। रविंद्र मधुसूदन प्रभु, पूछिए। जैसे प्रभु जी आपने कई फूड्स के बारे में बताया, जैसे कि ये पानी पूरी हो गया, पिज्जा, बर्गर, ये सब एक्चुअली हमें इसको बिल्कुल खाना है, मतलब मंदिर जाते हैं तो इच्छा होता है तो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए इसको? आप देख लो, इच्छा होता है इसका मतलब क्या है? रजोगुण है अभी, है या नहीं है? अगर बहुत रजोगुण है तो कभी कभार खा लो, लेकिन मैं तो कभी नहीं खाता। आपको पता है मैं तो उस यूनिट का HOD हूँ। कभी कभार फंस जाता हूँ खाली एग्जामिनेशन करने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने कभी बुला के, कभी मंगा के नहीं कहा कि आज मुझे पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है या सैंडविच। एक सैंडविच में कंप्लेंट आई थी तो मैंने पहली बार सैंडविच खाई। ब्रेड तो मैं टच ही नहीं करना चाहता, मैदा आइटम तो टच ही मत करिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगी, वो डिस्ट्रेस और मिजरी देंगे, डिजीज देंगे। तो जो व्यक्ति तमोगुणी है, रजोगुणी है, वो क्या करता है, अपने लिए स्वयं ही हार्म करता है।
इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। खुद खाएंगे तो वाइफ को मना कर सकते हैं, बच्चे को मना कर सकते हैं, वो भी खाएंगे। बेटर है खाने की इच्छा, आइसक्रीम खा लो, रसमलाई खाओ। पिज्जा बर्गर से 100 गुना टेस्टी रसमलाई है। टेक मिल्क प्रिपरेशंस, ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ फूड। हालांकि हमारे यहाँ उतना स्पाइस नहीं होता है, मैं अलाउ नहीं करता स्पाइस, माइल्डली है स्पाइस, बट स्टिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ health, it is unfavorable. So why should we take that thing which is unfavorable for us? तो हार्ड टेस्ट नहीं आया, रसमलाई खाओ, रस से पूरी थे, जितनी खानी है खाओ। रसमलाई आके ना श्योर, रसमलाई खाने के बाद पिज्जा में कोई टेस्ट नहीं दिखेगा, मच बेटर टेस्ट है इसमें। पिज्जा बर्गर क्या हमारे वैदिक कल्चर का फूड है क्या? इम्प्रूव। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन, ये सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे हृदय, देखिए ये फूड की लाइकिंग और डिजायर किस पे डिपेंड करती है? श्रद्धा पे। और श्रद्धा कौन से गुण से प्रभावित है वो बताता है कि हम किस टाइप का फूड में इंटरेस्टेड है। ये गहरा साइंस है जो कृष्ण बता रहे हैं, इस बात को समझिए। इस तरफ हमारा श्रद्धा जा रहा है या इस प्रकार के फूड को लेने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्योरिफिकेशन पुअर है नहीं। अरे कई भक्तों को, कुछ भक्तों कईयों को, कुछ भक्तों को खिचड़ी में जो आनंद आता है वो पनीर में नहीं आता है। तो पनीर नहीं खाएंगे, बेकार है, खिचड़ी ले आओ। तो भी ठीक है, प्रैक्टिकल रहिए। बहुत इच्छा है तो खा लीजिए, इच्छा को मारिए मत। लेकिन भगवान से प्रार्थना करिए, आप जगन्नाथ जी के लिए बढ़िया बनाइए और उनको ऑफर करके खाइए जो जगन्नाथ जी को पसंद है। जगन्नाथ जी को पिज्जा बर्गर तो नहीं ना पसंद है, तो फिर हम जगन्नाथ प्रेमी का है। जगन्नाथ जी के लिए तो मैं बनाता हूँ, तो स्पेशली जो उनको पसंद है, खिचड़ी एक होता है और पोड़ो पिठा, ये सब डिशेज मैं ही बनाता हूँ कभी कभी। अच्छा बनाइए, मैंने कहा कुकिंग एक्सपर्ट है, बनाइए। जो उनको बनाते हैं वही हम खाएंगे, हम तो उनका उच्चिष्ट ही खाएंगे ना। प्रभुपाद जी तो यही बोल रहे हैं, वी शुड टेक द रेमिनेंट्स ऑफ द फूड व्हिच इज ऑफर्ड टू कृष्णा। कृष्णा को पिज्जा बर्गर तो बना के नहीं देगा, ये लो ये आपका फेवरेट है, बोले जबरदस्ती है। उन्होंने कब कहा कि फेवरेट है? इसलिए वो भजन देखिए। जैसे अभी प्रेमा माता जी ने बताया ना कि उस भजन में जो जो प्रिपरेशन है, चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में मिले तो सची देवी पकाती थी, तो बहुत सारी प्रिपरेशन लिखी हुई है, क्या क्या प्रिपरेशन। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कितनी सारी प्रिपरेशन बनाई, गोपाल के लिए बनवाई। तो पढ़िए, जानिए, वो बनाइए। ऐसे करके आप बनाओगे, भगवान को भोग लगाओगे, उसके बाद पाप करोगे, आपको इतना असीम सुख मिलेगा, इतना जॉय मिलेगा। ये सब फिर क्या कूड़ा करकट खाने में कौन जाएगा? लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, हायर टेस्ट डेवलप नहीं होंगे, तो यही लेवल रहेगा टेस्ट का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कॉन्शियसली जो हमें गाइड किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करें, अप्लाई करें, धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन आएगा तो उसके बाद क्या है, मुझे तो कभी याद ही नहीं कि मैं कभी कहीं गया हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता, कि आज वहां प्रसाद है, बढ़िया प्रसाद होगा इसलिए वहां चलो, कोई इच्छा ही नहीं। नहीं तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि सारा दुनिया जीवा के वेग से चल रहा है। हिंदी का लेक्चर है प्रभुपाद जी का।
कहाँ पान है, कहाँ बीड़ी है, कहाँ सिगरेट है, कहाँ तंबाकू है, यही सब चल रहा है। आप बढ़िया से अपने भगवान जगन्नाथ जी को बनाइए, भोग लगाइए, और भाई देखिए कितना संतोष मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। बोलिए पुरुषोत्तम प्रभु, आप क्या पूछ रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शाम को प्रसाद बनाया तो कभी कभी ज्यादा बन जाता है, तो उसको हम फ्रिज में रख के सुबह गर्म करके खाते हैं। तो अवॉइड करने का प्रयास, आपके सामने प्रिंसिपल है, बिल्कुल सीधा है। ज्यादा क्यों बन जाता है मालूम नहीं है? ज्यादा बन गया तो बांट दीजिए, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। आसपास बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नहीं मिले कोई वॉचमैन को दे दो। प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो ना। प्रसाद मीन्स मर्सी, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या हुआ, कंसेप्ट नहीं समझ में आया? जी प्रभु। बड़ा धीरे से बोला जी प्रभु। जब तक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, चेंज नहीं आएगा, वही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम वी विल सी ऑफ austerities. Next Krishna is speaking about sacrifices. Sacrifices. Austerity will come next. The sacrifices according to the faith in 3 divisions. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।